Hello, students. How are you? I'm sure everyone is doing very, very well. I'm sure everyone has been slightly busy with maybe some exams which have just ended, or maybe gearing up for the holidays which are going to come up for Diwali. Very, very nice. Please do enjoy this time. Surely a time in the year it comes once where you have so many festivals coming up. बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी स्टडीज जो हैं उसको भी निगलेक्ट ना करें बिल्कुल. बट यस, डेफिनेटली देयर शुड बी वन बैलेंस, राइट? सो as we all know, we are continuing with our sessions for virtual science lab. Every weekend we have been doing these sessions for quite some time now. I think it's been a month where we have conducted these sessions every weekend. Saturday and Sunday 8 to 8:30 we go live and we give you 2 or 3 इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस जिसे आप समझ पाएं कि कॉन्सेप्ट क्या है. एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सिमुलेशन इज important. All of those things we discuss. Also we try and understand how this concept can be used in real life. तो concept to application कैसे होता है वो सारी चीजें हम समझते हैं, right? So without wasting a lot of time, let's start with today's simulations. Today again we are going to do 2 topics. The first topic which we are going to talk about is going to be the topic of material, metals, non-metals, ductility, malleability, right? ये सब आपने सुना होगा. So that's one topic. And another topic which we are going to do today is coal and petroleum. ठीक है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कोल पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्या है प्रोसेस होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम जब पेट्रोल भराने जाते हैं या कोल यूज करते हैं और हम बोलते हैं कि अरे वहां पे तो देयर इज अ कोल माइन, राइट? और तो कोल माइन बनी कैसे? हाउ डिड कोल come there in the first place, right? So these are some very interesting things which we'll be able to understand today by some very interesting three-dimensional simulations during this lecture, right? So let me start with materials first. This is our simulation in class 8. So class 7, class 8, ये सारे topics जो हैं उनके लिए काफी relevant हैं. As we know, we have been focusing on class 7th and 8th more in our talks in our virtual science lab sessions every weekend, right? So let's understand what is the simulation. It says the main objective is to allow users to experiment with various properties of material in a safe environment, right? This simulation is divided into physical and chemical properties, which is further divided into sub-experiments in understanding these properties, right? So we'll explore physical properties क्या है, chemical properties क्या है, और उनके साथ experiments क्या क्या है, and उनको हम लोग कैसे everyday life में apply कर सकते हैं. We'll also understand the individual material properties and how they differ for each other, है ना? अलग अलग materials के लिए उनकी जो properties हैं वो कैसे differ करती हैं. We are going to see that. So we have entered our lab, and as you can see, हमारा 3D 360 degree lab हमेशा होता है. For those who are attending this video for the first time, please do refer to our previous videos as well. At the same time, you would know that this is something called as a contextual help button, which is our robot, and that robot actually helps us understand various contextual helps, right? The next step kya karna hai, what is the use of this particular step, and all of those things, correct? All right, very nice. So I think we have come to a place where we are going to first talk about malleability, right? और हम मैलेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रूमेंट हमारा रखा हुआ है, और हम टेस्ट करने हैं वाले हैं मैलेबिलिटी ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, कोल. इन सब के हम मैलेबिलिटी चेक करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज मैलेबिलिटी, हाउ टू चेक इट. ये सारी चीजें हम लोग ट्राई करते हैं. I can choose any of these, right? I can choose any of these metals. So let's say I choose gold. I'll keep gold, and it's showing me to press this red button. So I'm going to press it. And as you can see, malleability basically means the ability of any substance uh, to be hammered such that it can be converted into sheets. Sheets मतलब there should be, जैसे पेपर होता है वो एक शीट है पतला, राइट? तो अगर एक मोटा सैंपल है हमारे पास किसी चीज का, हम उसको इतना हैमर करेंगे कि वो पतला हो जाए, तो उसको वो जो प्रॉपर्टी है पतला होने की, हैमरिंग के वजह से पतला होने की जो प्रॉपर्टी है, उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं. We call that as malleability, right? So let's say I'm taking silver now and I'm going to press this button again.
तो गोल्ड तो काफी मैलेबल है, यू कैन सी दैट गोल्ड जो है वो एकदम प्लेन शीट में कन्वर्ट हो गया है। सिल्वर की मैलेबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, राइट, क्योंकि वो थोड़ा थिक ही रहा है, इतना ज्यादा पतला हम शीट उसमें से बना नहीं पाए। इसका मतलब अगर कोई आपको पूछे कि विच वन इज मोर मैलेबल, इज गोल्ड मोर मैलेबल और सिल्वर मोर मैलेबल, देन द आंसर शुड बी गोल्ड, राइट। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो है वो गोल्ड के बनते हैं, बिकॉज उसको इजीली अलग अलग शेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी ज्वेलरीज मेड अप ऑफ गोल्ड, सो मेनी इंट्रिकेट ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड। एज यू कैन सी आयरन थोड़ा और कम मैलेबल है। चलो कोल लेके देखते हैं कि कोल मैलेबल है या नहीं या क्या है। ओ, ये तो बिल्कुल ही कचरा, मतलब चूरा हो गया कोल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैलेबिलिटी इन कोल इज एब्सोल्युटली जीरो। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हम एक्चुअली जाके किसी फॉन्ड्री वगैरह में तो नहीं कर सकते, बट थ्रू अ सिमुलेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। द रीजन इज बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू यूज सिमुलेशंस इन आर एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी के लिए क्या होता है? तो the ability of metals to be stretched into sheets, into smaller wires is called ductility. तो मैलेबिलिटी क्या है? उसको हैमर करके हमको उसको चपटा करना है, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। और डक्टिलिटी मतलब उसको खींच के उसको पतला करना है। वी हैव टू मेक इट a small diameter of the original metal, that is called ductility. So let's see what happens. द फर्स्ट वन वी आर पुटिंग इज गोल्ड रॉड। ये गोल्ड रॉड जो है, हम यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स अ फर्नेस। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज इट हीट्स द गोल्ड रॉड। तो उसको थोड़ा सा वो हीटअप करने की वजह से गोल्ड रॉड थोड़ा सा इट इट कम्स क्लोजर टू इट्स मेल्टिंग पोजिशन, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज कि अब हम जब उसको इसके थ्रू पास करवाएंगे थ्रू आर दिस काइंड ऑफ अ ब्लोअर, व्हाट विल हैपन इज, ये क्या कर रहा है देखो, ये जो गोल्ड है उसके साइज को कम कर रहा है। Can you see the radius here is much more than the radius over here? That shows that this is a ductility process. And there are three dyes. Through those dyes, we are letting the gold pass. Right? तो गोल्ड ने तो एक्चुअली टेस्ट पास कर लिया, तो काफी ज्यादा डक्टाइल है, क्योंकि वी वर एबल टू कन्वर्ट द शीट्स थ्रू गोल्ड वेरी वेरी इजीली। अब हमने क्या डाला है? नाउ वी आर गोइंग टू पुट आयरन, आई थिंक, एंड वी आर गोइंग टू चेक, और सिल्वर आई थिंक, एंड वी आर गोइंग टू चेक व्हाट हैपेंस विथ सिल्वर। Same story. What are we going to do? We are going to now have our silver passing through the dice, right? And as you can see, the rotation of the wheels has started happening, right? And as the wheels are rotating, what is happening is that the silver is going forward, correct? And through the die, it is reducing in size. Okay? That is the case with silver. Like that, I can check for anything. So this one is wood over here. तो wood का अगर हमने एक लकड़ी ली है, तो अब देखते हैं क्या होगा। क्या wood डक्टाइल है? Let's check if wood is ductile. So what is happening is that whatever wood is going through, it is actually getting burned, and it's actually just falling inside over here, and it's not able to go ahead, obviously, because this is a furnace, right? And a furnace wood actually gets burned, and therefore you would see that the wood was not able to go through. Like this shows that wood is not ductile. ये ductile नहीं है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब ductile है, बट सबसे ज्यादा easily ductile जो है वो gold है। Okay. Moving on to the next experiment. Now, this experiment is very, very interesting. It is basically conduction of heat. हमने ये experiment एक बार पहले भी देखा है when we were discussing about different types of heat, conduction, convection, radiations. उसमें भी same experiment था. You can refer to that video as well. But let me quickly do a few steps over here to help you understand. तो यहाँ पे क्या है? ये wax है, ये nails है, right? नेल्स के नीचे वैक्स लगा रखा है, और वैक्स को हम लेके चिपका रहे हैं ये सिल्वर वाली प्लेट के ऊपर, राइट। देन नेक्स्ट इसी तरीके का अरेंजमेंट है, उसको वैक्स ले रहे हैं, वैक्स को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं ताकि वो इजीली चिपक जाए, और अब हमने इसको लगा दिया है गोल्ड पे, राइट। लाइक दैट वी आर डूइंग इट फॉर सिल्वर, वी आर डूइंग इट फॉर
wood, we're also doing it for iron. Okay, so as you can see, आयरन पे भी लग गया है। अब हमारे पास सिर्फ एल्यूमिनियम, आई थिंक एल्यूमिनियम ब्लॉक बचा है, यस एल्यूमिनियम ब्लॉक बचा है, और हमने उसके ऊपर भी लगा दिया, राइट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस burner, and when I start this burner, there will be conduction of heat happening to all the five fan of all the five hands of the fan, right? जो मेटल ज्यादा इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा या हीट कंडक्ट कर देगा, उसका एंड तक हीट जल्दी पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ विच द वैक्स बिलो विल मेल्ट एंड फॉल डाउन। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हीट ज्यादा जल्दी कंडक्ट हुआ, एंड दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बट इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि विच वन ड्रॉप फर्स्ट, विच वन ड्रॉप लेटर, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू ऑब्जर्व। ओके, लेट्स सी। So till now nothing has dropped. I'm just taking it fast forward. Okay, we have silver to have dropped. सिल्वर का जो नेल था वो गिर गया, अब गोल्ड का गिर गया है। We have gold which has dropped as well. Now let's see what else is going to drop. Aluminium has dropped, and then definitely it has to be iron, and then wood. तो इससे हमें समझ में आता है कि कंडक्शन ऑफ हीट किसका अच्छा होता है, राइट। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो कंडक्शन ऑफ हीट किसका अच्छा होता है, दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। अच्छा, अब अनदर थिंग विच इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये देखेंगे कि विच ऑफ दीज डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स, आर एक्चुअली एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस, ठीक है। तो जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं गोल्ड, बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है, राइट, गोल्ड की, इसका मतलब गोल्ड इज डेफिनेटली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स मूव ऑन टू सिल्वर। सिल्वर ऑल्सो हैज वेरी ब्राइट लाइट, इनफैक्ट ब्राइटर देन गोल्ड, which means that silver is a very good conductor of electricity. Then we have copper. Copper again, very good conductor of electricity, and that's why you see that copper is used in copper wires, correct, for understanding electricity and to be able to conduct it very easily. Then we have aluminum, जिसमें decent enough electricity conduction है, and finally we have a normal bulb which is having wood in its circuit, and that wood is actually not conducting any electricity, and that means wood is a bad conductor of electricity, राइट। सिंपल, समझ में आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है, बट जब आप इसको विजुअली देखते हो तब आपको और क्लियर होता है और अच्छे से इसके बारे में समझ में आता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब करोजन पे चलते हैं। सो सो लेट्स सी व्हाट इज द केस। ड्रॉप नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो हमने नेल्स ले लिए हैं और हमने हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है, A B C D E, इस तरीके से हमारे पास चार पांच टेस्ट ट्यूब्स वी हैव केप्ट। Okay, now what are we going to do? What is the next step? We're going to just see कि rusting कहीं पे हो रही है क्या? As is there any rusting at any place happening? So you see that this nail has turned red. Correct? This nail has turned red. मतलब इनके solution में. Okay, let's zoom out. Let's see what are other cases. यहाँ पे you will see this is a mixture of salt, air and iron nail. यहाँ पे है वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम नेल। दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड आयरन नेल। दिस इज वाटर, ऑयल एंड आयरन नेल, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब द पॉइंट इज दैट इससे हमें सीखने को क्या मिला। सो इफ आई जूम इन, you will be able to see what happened. There is no degradation, right? And in fact, there is a precipitate which has been obtained. So what we are trying to say is that इससे हमें पता चलता है कि कोरोजन कहाँ कहाँ पे होगा और कहाँ कहाँ पे कोरोजन नहीं होगा।
right? Depending upon acids, bases which are involved in the solution. नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद वाटर के सेक्शन में. तो रिएक्शन विद वाटर में वी हैव H2 गैस विच इज हाइड्रोजन गैस. कुछ नाइफ और कुछ फिल्टर पेपर है. आई थिंक वी हैव few filter papers and we also have sodium metal. Okay, cut sodium metal. तो अब हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल उठाएंगे, सोडियम मेटल को हम कट करेंगे. सो लेट मी क्लिक ऑन द नाइफ. Now we'll take this one part of the sodium metal and put it in water. As you can see, हो क्या रहा है, ये फटने वाला है बिकॉज सोडियम मेटल के साथ जब पानी रिएक्शन में आ जाता है कांटेक्ट में, सो इट इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव. ओके, so now you have understood how sodium metal is to be used, and we have put it inside water, and it is highly exothermic because it produces kind of a sound which is like a blast, right? So sodium is a very reactive metal. ये हमने कैसे पता किया, पानी के साथ उसका रिएक्शन कैसा है वो देख के हमने पता किया कि सोडियम जो है वो रिएक्टिव है या नहीं, राइट? Next is we have to create a solution for beaker A, add copper sulfate. So this is copper sulfate which we are adding. And we are going to, I think, add zinc along with that, zinc granules. So let me just quickly take copper sulfate. I think we have to take the spatula and put it in the first one. So let me hold it from the front itself like this. We've taken the spatula and we've put it in. And now we are doing the stirring. Okay. What is the next thing? We have taken another spatula which has zinc in it, and we are going to add that spatula, zinc one, in this. So what is going to happen, guys? ZnSO4 बनना चाहिए और copper बनना चाहिए, as you can see over here, ZnSO4 and copper. तो इससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, जो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है वो पता चलती है. डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसको? कॉपर प्लस टू आयन को Zn+2 आयन ने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ZnSO4 बन गए और Cu कॉपर जो है वो पीछे रहेगी. सो दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड. ठीक है. All right. Now, as you can see, reaction is given on the top. Next, they are asking us to make copper sulfate mixed with iron. So this is going to be iron sulfate mixed with copper. So again, as you see, this is something which is going to keep on happening. हम यहाँ पे substances लेंगे, substances को mix करेंगे और फिर double displacement reaction होगा. उसमें से जो reaction से बनेगा वो नीचे रह जाएगा और जो filtrate बनेगा वो liquid के साथ mix हो जाएगा. So this is a very interesting example for that. Perfect. So I think everyone has understood what are the different types of tests which we can do to understand what is corrosion, what is reaction with water, what is displacement reaction. At the same time, physical test में भी हमने ductility देखी, malleability देखी. At the same time, conduction of heat देखा, conduction of electricity देखा. So all these are extremely important topics as we've been discussing for competitive exams as well. So please make sure that you are checking these out for competitive exams. Another very interesting simulation which we are going to take, which is very well made also. The reason is because this shows the three-dimensional structure of the land masses, right? So as you see, the main objective is to observe and understand the process of formation of fossil fuels started millions of years ago, right? So we have to understand the steps involved in coal, petroleum, and natural gas, and understand how natural disasters brought the changes needed for the present form. ठीक है. तो जैसा हमारा डिस्कशन चल रहा था कि वी वांट टू नो हाउ इज दिस पेट्रोल वी आर गेटिंग, राइट? हाउ आर वी गेटिंग कोल? हाउ इज देयर कोल माइन समवेयर? हमको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोयले की खान है, करेक्ट? तो वो बनी कैसे? हाउ वाज इट मेड? Correct. So as you see, there is something which has been very, very well created by our team. And as you see over here, this is a landmass, and we are going to find out कि इसमें से अगर हमको कोल निकालना है तो कैसे निकालते हैं.
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोल बनता कैसे है। तो कोल जो है गाइस, कोई अलग से चीज से नहीं बनता। इट्स जस्ट मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, और वो जो कोल है, वो जो कार्बन आ रहा है, दैट कार्बन कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थक्वेक की वजह से, मे बी जब अर्थक्वेक आ रहा है उसकी वजह से हो कि वो गिर जाएं, या प्लांट्स जो है वो काफी सारे प्लांट्स टूट जाएं, they will regrow, right? Plants will keep regrowing. Then we might have volcanoes, for example. तो volcanoes की वजह से सारे plants जो है मर गए और वहीं land पे ही रह गए, right? So that is because of uh, volcanoes, or we could have floodings, right? तो flooding में क्या होता है कि आपने एक बार flood कर दिया, right? तो उसके बाद you have again plants and trees to grow. But what is interesting to note is, after every iteration there will be land masses where continuously there is multiple of organic substances, organic compounds which are present, right? ऐसे situations में we can have various things which can be created to not allow the carbon substances to leak away and to be present in the land only, right? So as you see, volcanoes are something because of which naturally there is a loss of lot of carbon life, lot of organic life, but at the same time, because it is organic, because there is so much of carbon going around, we are able to actually utilize this carbon later on in the form of fuel. तो अब आप देखोगे कि लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर आपके ऊपर ये फ्यूल का जो प्रोडक्शन है, दैट इज गोइंग टू कीप ऑन सेडिमेंटिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और उस पे ऊपर वाली लेयर से लगने वाले प्रेशर की वजह से सारा का सारा कार्बन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, एंड फाइनली व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज coal at a depth from the sea level. But once we reach there, we actually get an entire mine of coal, and that is something which is very, very useful and interesting for us. तो बेसिकली अगर बोलने चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोल हमें मिलता है वो बहुत सालों पहले, ठीक है, लाइक 200 मिलियन ईयर्स बैक, वो वहां पे इतने ज्यादा ट्रीज एनिमल्स वगैरह हुआ होंगे, और उनको कोई फ्लडिंग या कोई वोल्केनो या अर्थक्वेक की वजह से वो दब गए होंगे, और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर और चीजें दब रही है, जिसकी वजह से जो जो लेयर उनका था जहाँ पे वो सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो अंदर दब गए थे, that layer becomes the coal mine in the future, right? So this is how our entire thing works. Okay, moving on. So this was formation of coal. Now destructive distillation of coal. Now what does destructive distillation of coal mean? Very simple. Destructive distillation का मतलब ये होता है कि वो वाला distillation in which air is not involved. So combustion of coal in the absence of air is called destructive distillation. ठीक है, तो ये आप देखो क्या किया है. Spatula has taken some crushed pieces of coal in test tube. Okay, now we have water. Water is being poured in the other test tube, in the second test tube. ठीक है, okay. फिर उसके बाद coal and water are connected like this. ठीक है, एंड यू कैन सी कोल के अंदर कोई पेट्रोलियम या कोई भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं है. एंड यहाँ पे ये जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सारा सैंपल है, और ये ए से जा रही है और बी से बाहर निकल रही है, राइट? देयर आर टू पाइप्स थ्रू व्हिच इट इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट. नाउ just check what we are doing. We are actually going to switch on this Bunsen burner. ठीक है, Bunsen burner ऑन करते हैं. So I think just waiting for, yeah. So as you can see, Bunsen burner is on, and you can see that coke is actually, coke basically means coal. Okay, coal is actually starting to burn. That, because why is it burning? Because of the heat which we are giving. That burning heat is actually going into water, and then water is converting it into coal gas. Okay, this is very, very crucial, very, very important for our substances.
Okay. Okay, moving on. So this is called destructive distillation of coal. Now, petroleum and natural gas. Let's understand what all things are covered in this over here. So petroleum and natural gas also work in a similar manner. जैसे हमने देखा था fossil fuels की वजह से we have coal to be obtained to us, and coal is something because of which we are able to burn coal and get instant energy right out of it. So that is why coal is important. But when it comes to petroleum and natural gas, it is important that we understand what roles fishes actually keep playing. Okay, so let's move on. You can see that this is water on the top, and there is land at the bottom. And as you can see, that this is the place. This is very, very, very beautiful, right? If you see, there's so many fishes and all over here. If you move on ahead, you will see that the water level has kind of risen, but aquatic life has actually sedimented, and fossils of that aquatic life are present over here. As years pass, over 100 years later, 100 million years later, you will see that it has accumulated more, and you have more lesser water on the top surface. Then, as you go further, the level of water kind of remains the same, but you will realize that the aquatic life, which was stuck at the bottom, is actually remaining the same, right? And finally, when we submit and we want to find out what is the result, what we can do is we can actually create models uh, for these simulations, and so the students can use it at home. But very, very interesting to see how petroleum is actually going to get created through this process. Okay, moving on. Petroleum, natural gas, that's all that was there from this particular slide. We come to quiz. I hope everyone remembers that we have discussed this before. A quiz typically has 5 questions, right? If it's an internal quiz, which is a quiz by the simulation itself, where you don't have to go anywhere, we typically have 5 questions, but the interesting thing is that these 5 questions are randomized. So what that means is that there could be a situation where two students are logging into the same simulation, and they get two completely different set of questions, which is absolutely okay. But you need to make sure that आप जब ये आंसर कर रहे हो तो ये किसी के साथ शेयर मत करो क्लास में, because what will happen is कि if you share it and their question might be different, then they might get lesser marks. So just try and use this for practice as much as we can, and just try and see if you can spread the word about virtual science labs and about Homi Baba Foundation. Those are some things which are going to be really, really helpful for us. As you can see at the end, you get a check answer option where you can find out what is the correct answer and what you had written. But at the same time, we must also encourage you to write the correct answer directly. All right. So these are the two simulations actually, which we had planned for today. I hope everyone has liked our series of virtual science lab, which we are continuing. Also, I'm sure everyone is sharing it with their friends. The links post the session. I'm sure everyone is doing that. Please keep telling us your feedback as to how you like these sessions, and check our simulations out. You have it on your dashboards at Homi Baba Foundation. I think we'll meet tomorrow with another set of virtual simulations. Till then, thank you so much for joining in, and hope you have a great day ahead. Thank you.